Hello students, how are you all? We are back again on your favorite learning platform, Learn Forward by Vidya. Today we are going to study a chapter which is basically the major crops in India. So let's start. Now, today agriculture is one of the most important occupation of the world. But what is agriculture? Agriculture is growing of crops and rearing of the animals. So this is what we study in agriculture, which we have studied in the past classes also. Now let us understand this in more detail, because today in our chapter we are going to study about the crops that we grow in India and other parts of the country, and what kind of conditions or the soils or the terrain is actually helpful in the growing of these crops. More than half of the world's population is directly engaged in agriculture. With the increase in population, the demand for food and other necessities of life have also increased. As such, many kinds of crops are grown in the world to meet the human needs. अब ज़्यादा crops क्यों चाहिए? क्योंकि population बढ़ रही है, so demand for crops is also growing. So the crops, they provide raw materials for the industry. So what do the crops do? They provide a lot of material, raw material for the agro-based industry. अब ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे. ये क्रॉप्स जैसे सीरियल्स होते हैं, देन वी हैव ऑयल सीड्स, वी हैव पल्सेस, वी हैव स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर्स एंड बेवरेजेस. Many of these foods crops are required for human consumption, while others may be cash crops or commercial crops that are processed and that are traded. तो अब हम पहले पढ़ते हैं कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, फूड क्रॉप्स क्या है, क्या डिफरेंस होता है. जो क्रॉप्स आप बिजनेस पर्पस के लिए लगाते हो और वो आप बेचते हो या एक्सपोर्ट करते हो और आपको वो रेडी कैश देता है फार्मर्स को, वो आपके कैश क्रॉप्स होते हैं सिंपल टर्म्स में. सो व्हाट आर कैश क्रॉप्स? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर बिजनेस पर्पसेस. दे आर ग्रोन फॉर to be sold or exported, and they help farmers to earn ready cash, hence they are called cash crops. But if we talk of food crops, wheat, rice, maize, pulses, oilseeds, spices, beverages, fruits and vegetables are included under the food crops. The chief food crop in area is known as the staple crop. जो उसका उस जगह का जो फूड खाया जाता है, क्रॉप खाया जाता है बहुत ज़्यादा, वो उसका चीफ फूड क्रॉप होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया and how practices like green revolution increase the food crops in India. India is a country with strong agriculture base, which means a significant part of the economy depends on farming and growing season. तो अगर हम इंडिया की बात करें, हमारा जो बैकबोन है ना, वो हमारा बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर है. रीजन इंडिया इज सो डाइवर्स, क्यों? बिकॉज एक तो इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत वेरीड क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन मिलती हैं. हर एक जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, सॉइल है डिफरेंट है, इस करके अलग अलग आप क्रॉप्स वहाँ उगा सकते हो. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. फर्स्ट इज राइस. राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया में. ये स्टेपल फूड क्रॉप है फॉर अबाउट 50% द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. 50% लोग जो है राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं. राइस जो है, जो राइस का हस्क और ब्रैन है, ये फॉडर में काम आ जाता है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है. इट इज ग्रोन बाय द प्रोसेस कॉल्ड पैडी ट्रांसप्लांटेशन. इसके अंदर सीडलिंग्स जो हैं, दे आर ग्रोन इनटू सीड ब्रेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फील्ड सोक्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. पर राइस को उगाने के लिए खूब सारा पानी चाहिए होता है. It is one of the most important crops in India. It is mostly grown in regions with lot of rainfall such as eastern and southern states like West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh and Tamil Nadu. तो यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रहता है, as it needs a lot of water to grow and these states have the right amount of rainfall and cultivation, so rice can be easily grown here. Now let us understand कि क्या favorable condition है राइस की cultivation के लिए. टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोइंग सीजन के अंदर. रेनफॉल की बात करें तो 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है. सॉइल्स कौन सी यहाँ चाहिए? क्लेई सॉइल, लोमी एंड एलुवियल सॉइल चाहिए राइस की कल्टीवेशन के लिए. प्लेन्स स्पेशली डेल्टास एंड फ्लड प्लेन्स एंड हिली एरियाज. राइस जो है लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यहाँ पे लेबर डिपेंडेंट क्रॉप है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सोइंग. आपने देखा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है. ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये सब कुछ सब मैनुअल लेबर से होता है, हाथ से होता है, राइट. और यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ जो राइस है इंडिया के अलावा कहाँ है ना, इंडिया तो है ही, बट देन वी हैव चाइना, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, इजिप्ट, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इटली, ब्राजील, Turkey, Spain, France, USA and the coast of Georgia, they are all are rice producing areas. हम बात करें फिर wheat की, जो हमारा दूसरा staple diet है, large part of the world, ये grow करता है temperate lands में. यहाँ पे भी जो wheat का production होता है वो extensive commercial grain farming होता है. Wheat is a staple crop in India and it is essential for making bread and other wheat-based products. It is grown in the northwestern regions of the country like
Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan. ये जो states हैं, they have fertile land, they have climatic suitable for wheat cultivation. If we talk of the favorable condition for cultivation of wheat, we need a temperature of 10 degrees centigrade when we sow it, and 15 to 20 degrees centigrade when it is required for ripening. Now, if we talk of the rainfall, 40 to 75 centimeter, but it should not go above 100 centimeter. If we talk of soil, we need well-drained loamy soil, especially the brown prairies and chernism which are rich in humus. So हमें humus से laden soil चाहिए होता है, and the land should be undulating, which allow the drainage of soil. Then we have manual labor which is used in it. If we talk of the areas of production, USA, Canada, Russia, China, Australia, Argentina, Italy, Spain, Mexico, Chile, Pakistan and India are the major wheat producing areas. Now if we talk of millets, which has actually taken a rise in last few years, coarse and poor quality grains like jowar, bajra and ragi, which are very good in nutrients, are known as millets. As compared to other crops, they have low nutrition value. Millets are used as fodder and for making beer and whiskey. China, India, Brazil, Nigeria, Egypt, etc. and main millet producing countries. In USA, millets are grown as fodder. Millets are grown in areas of high temperature, low rainfall and less fertile and sandy soil. They are grown in semi-arid part of region and tropical and subtropical region. इंडिया में जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, ये basically millet growing areas. Then comes the pulses. आप सब खाते हैं pulses, दालें खाते हैं? Yes, let's understand because they are the major source of protein. हमें क्या देते हैं दालें? So don't make faces when mama cooks pulses, right? Because they have a lot of protein which is actually required for a growth. Now in India, and if we talk of chickpeas जिसे हम चना कहते हैं, lentils जिसे हम दालें कहते हैं, pigeon peas जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, ये जो है ये कॉमन पल्सेस हैं. ये कहाँ पे कल्टीवेट होते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में. Then let's come to the fiber crop. Fiber crops वो field crops हैं which are grown for the fiber. Fiber crops को हम क्यों उगाते हैं? उनके फाइबर के लिए. ये जो फाइबर है इससे हम कपड़ा, क्लॉथ बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, रोप बनाते हैं, एक्सेट्रा. ये जो मेन फाइबर वाले क्लॉथ्स हैं, दो हैं इंडिया की जो मेन क्रॉप्स हैं, वो है कॉटन और जूट. कॉटन एक फाइबर क्रॉप है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप. It is a main raw material for cotton textile industry, and the quality of raw cotton basically depends on the length of the fiber. कैसे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द फाइबर क्या, उसका शाइनिंग सरफेस कितना है, सॉफ्टनेस कितना है, फाइनेस कितना, कलर क्या है, और उसकी स्ट्रेंथ और क्लियरनेस पे. ये एक एनुअल क्रॉप है. इसको क्या चाहिए होता है? इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत सनशाइन चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ कॉटन बॉल्स. देन मॉडरेट रेंज ऑफ चाहिए होती है 60 to 100 सेंटीमीटर इन फ्रीक्वेंट शॉट. और ब्लैक सॉइल हमने पहले भी पढ़ा था. कौन सी सॉइल हेल्प करती है कॉटन को ग्रो करने के लिए? ब्लैक सॉइल. इफ वी टॉक ऑफ यूएसए, चाइना, ब्राजील, इजिप्ट, सूडान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, दे एंड मेक्सिको, दे आर द लीडिंग कंट्रीज where cotton is produced. Cotton जो है it is grown on small farms, hence not too many machines are used. Cotton was first cultivated in India during the Indus Valley Civilization. हमने पढ़ा है कि ये पहले हमने पढ़ा था Indus Valley Civilization में कि cotton cultivate हुई थी. ये एक इंडिया हमारा एक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का. और जो लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश. मोस्ट ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया is a short or medium staple kind. The long staple variety is now grown in parts of Haryana and Punjab. Then let's come to the next fiber. This is the next fiber. It is important fiber crop. ये है गनिंग सैक्स बनाने काम आता है जूट, आपका कारपेट बनाने काम आता है, मैट्स बनाने के लिए बैग काम. जो जूट होता है हम उसको मार्च या अप्रैल में उगाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अगस्त या सितंबर में. इसके लिए हमें बहुत अबंडेंट लेबर चाहिए होते हैं जूट प्रोडक्शन की. इस करके कहाँ उगाएंगे? जहाँ पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तभी लेबर आपको इजिली मिल जाएगी. जूट के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए जो कि 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए. एनुअल रेनफॉल ज्यादा चाहिए. जब हमने ना 60 to 100, यहाँ पे 100 से ऊपर. इट शुड बी अबव 150 सेंटीमीटर. सॉइल कैसी चाहिए? एल्युबल फर्टाइल सॉइल चाहिए, रिवर डेल्टास एंड फ्लड प्लेन्स. और इसमें लेबर हमें बहुत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जूट के लिए मैनुअल लेबर बहुत होता है. इस करके आप वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में जूट उगाते हैं जहाँ पे आपको चीपर रेडली लेबर मिल जाता है. इंडिया में अगर हम बात, इंडिया में जूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. देन वी है बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, ताइवान, थाईलैंड एंड मलेशिया. ये सारी मेन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं. इंडिया इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. In India, West Bengal is the largest jute producing state, followed by Bihar and Assam.
जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. ये इट इज कॉल्ड द ब्राउन पेपर ऑफ द होलसेल ऑफ ट्रेड एंड इट इज यूज्ड इन मेक पैकिंग द मटेरियल्स. जूट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. So this is known as golden fiber. It contributes a lot to the economy of the country. Every crop does, but yes, it has significantly great share. Now let's come to sugar cane. Sugar cane एक फूड क्रॉप भी है और कैश क्रॉप भी है. ये कैश क्रॉप है इंडिया में. और हम बात करें कहाँ उगता है शुगर केन, ज़्यादातर शुगर केन आपको यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखेगा. ये शुगर केन शुगर बनाने के काम आता है, जो कि हमारे फूड एंड बेवरेजेस का मेजर पार्ट होता है. इसको उगाने के लिए 20 to 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है एंड 70 to 120 सेंटीमीटर फॉल की रेनफॉल चाहिए होती है. इफ यू टॉक ऑफ शुगर केन, देयर इज वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट source of sugar, that is your sugar beet. Now we have done the fiber crops. Now let's come to the beverage crop. Beverage India में, because without the beverage our day doesn't start. टी, कॉफी, कोका, ये बेवरेज क्रॉप्स हैं. ये जो है ट्रॉपिक्स में ग्रो करते हैं, सब ट्रॉपिक्स में एज प्लांटेशन क्रॉप्स. नाउ व्हाट इज टी? इट इज ऑब्टेन, टी लीव्स जो होती हैं वो टी इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ एवरग्रीन बुश. टी इज द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज वर्ल्ड ओवर. द टी बुश यील्ड्स लीव्स ओनली इन द 3rd year. तो टी को उगाने में टाइम लगता है. इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर, 100 से 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल. सॉइल अगर हम इसके लिए टी के लिए एसिडिक वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए जिसमें हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी हो. टी कहाँ उगाते हैं? टेरेस और वेल ड्रेन हिल स्लोप से उगाते हैं. और लार्ज स्केल लेबर चाहिए होती है. यहाँ टी के प्रोडक्शन एरियाज हैं चाइना, इंडिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आर द मेजर टी growing areas or tea producing areas. If we talk of the second beverage, that is your coffee. The coffee tree was first discovered in Kaffa in Ethiopia. It is today grown in large part of the tropics and is very popular beverage. अगर इसकी वैरायटी की बात करें, अराबिका, रोबस्टा और लिबर्शिया, ये इसकी इसकी ना कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं. इसके लिए आपको कैसा टेम्परेचर चाहिए? 14 to 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए. इसमें फ्रॉस्ट फ्री रेस होने चाहिए. रेनफॉल की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. देन व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर कॉफी प्लांटेशन? कॉफी के लिए रिच पोरस सॉइल एंड इवन वोल्केनिक सॉइल चाहिए होगी. इसकी जो हाईलैंड्स है इनअंडेटेड हाईलैंड चाहिए होंगे, स्लोप्स एंड प्लेट्यूज फॉर विच विल बी सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन. इफ वी टॉक ऑफ लेबर, दिस इज अगेन डिपेंडेंट ऑन abundant labor available in that particular area. कौन कौन से एरिया सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है? ब्राज़ील, देन कोलंबिया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, इक्वाडोर एंड पापुआ न्यू गिनिया. ये सारी जगह हैं जो कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं. इंडिया के अंदर भी टी एंड कॉफ़ी के बहुत सारे प्लांटेशन हैं. टी की बात करें, दे आर ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड केरला. बट अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में ग्रो की जाती हैं. दीज बेवरेजेस आर एंजॉयड बाय पीपल ऑल ओवर द कंट्री एंड दे एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. सो एज आई सेड दैट आवर डे डजंट स्टार्ट without sipping a sip of tea or coffee. So India is basically producing tea in Assam, West Bengal and Kerala, while if we talk of coffee, it is produced in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and it is exported as well. Now if we talk of fruits and vegetables, India is rich in the production of fruits and vegetables, be it mangoes, bananas, potatoes, tomatoes, onions and many other fruits and vegetables that are grown in the part of country. These crops provide essential nutrients and vitamins to our diet. So अगर हम now, how many of you don't like eating fruits and vegetables? Please don't avoid it, because in case you do, then you will be forced to eat a lot of vitamin tablets. So instead of having those vitamin tablets, please depend on fruits and vegetables. In conclusion, India's agriculture is diverse and extensive due to varied climate and soil conditions. The country grows a wide range of crops from rice and wheat to millets, pulses, cotton, sugarcane, tea, coffee, and variety of fruits and vegetables. Agriculture is a vital sector that provides food and livelihood to millions of people in India, making it an essential part of the country's economy and culture. Now, in case we have to revise whatever we have done, you can revise that these are the states producing particular food crop, be it rice, wheat, maize, tea, coffee, cotton, jute or pulses. So please learn this chart, which is very important. Then let's come and for sugarcane as well. Now let's come a farm in India. It is farm from the rural belt of Karnataka. A farm in India is a farm from the rural belt of Karnataka. This area has faced a prolonged drought. यहाँ पे A farm की बात करें तो ये जो है यहाँ पे continuous drought रहता है, सूखा हो गया था. Its farmers were looking for state assistance and subsidy. अब farmers जो थे अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, dependent थे कि कोई हमें subsidy मिले and we can rework on this. There was much scope for replenishment of both surface
irrigation and groundwater supplies to overcome the effect of drought. अब आपका पानी नहीं है, सूखा पड़ गया, तो उनको कुछ ऐसा मेथड लाना था जिसकी वजह से उस जगह को enrichment मिले. The small farm had of course a surface tank for rainwater harvesting, but there was hardly any water or examination of tank. पर इनके पास एक टैंक होता था पानी को कलेक्ट करने के लिए, पर पानी ही नहीं होता था. It was observed that it was a crude type of ditch in which water percolated to subsoil. तो ऐसा लग रहा था वो पानी जो है ऊपर सब सॉइल में ही रह जाती है, आगे जाती नहीं है. तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन बना, नो सिंगल फार्म वाज मोर देन 1.5 hectares in area. A variety of crops are grown on a small plot of land. The village we visited was just one but comparatively bigger in size among the other villages in India. The story of over half of the population in the villages being illiterate and ran through the village as well. These farmers could be little concerned with the environmental production and protection development. Their predicament did not allow them to be concerned with health and nutrition. तो अगर हम बात करें जो उन्होंने विजिट किया लैंड, वहाँ पे जो था ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों थी, वहाँ पे जो विलेजेस थे वो दे वर नॉट लिटरेट, दे वर नॉट यूज टू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, दे वर नॉट अवेयर ऑफ sustenance of agriculture, which created such extreme condition in that particular area. So this was all about the chapter. Let's come to the questions. The leading producer of coffee in the world is Brazil. If we talk of Russia, it's an important producer of wheat. Robusta is a variety of coffee. The growing of fruits and vegetables is known as horticulture. Jute is also known as the golden fire. Agriculture is one of the most important occupations of the human being. Nearly two-thirds of a country population is engaged in agriculture. In hilly areas, rice is grown on terrace fields. Rice is a staple crop. Sugarcane is a cash crop that requires a temperature of 20 to 27 degrees centigrade. If we talk of match the following, Arabica जो है it is basically a variety of coffee. Coca is used to make chocolate. Then jute is a golden fiber. Staple is like depends is your cotton, it depends on the length of fiber. Grain revolution is a modernized Indian agriculture. What do we now? Let's come to question answers. The questions in brief. D part. First part is define the term agriculture. Agriculture is the production of crops and rearing of animals. What do you mean with agricultural development? Agricultural development means assistance given to the farmer in terms of literacy, in terms of food, in terms of providal of the high variety seeds and irrigation facilities, so that there can be a boost in agriculture. What kind of soils are best suited for rice cultivation? Which method is employed in India to grow rice? If we talk of the soil rice cultivation, rice requires a lot of water, right? It requires clayey alluvial soil and the loamy soil. So when we grow rice, the kind of soil we have mentioned, what method which we involve in rice cultivation is the manual labor, and here we need a lot of water for the cultivation of rice. What is a golden fiber? Jute is known as a golden fiber. Give a short note on intensive substance in agriculture. In intensive substantive agriculture, we use a small area of land which is provided to the farmer for growing the crops that can actually help in his subsistence. Now let's come to the major what is the difference between the agriculture pattern between a farm in USA and farm in India. The major difference in USA, the farm holdings are huge. In India it is less. In India it is the farms are held by the farmers itself. It may not be the same in USA. In USA the techniques used are far better, and they use high yielding varieties of crop, which is not the same in India. In India, the result may not be that good, which is there in USA, because of modern techniques, because of better irrigation facilities, and because of high yielding variety of crops. Now let's come to the next question. Next question is, what are the major challenges Indian agriculture facing today? The major challenges faced by Indian agriculture is their dependence on monsoon for irrigation. They don't have better irrigation facilities. They are not literate, right? Which they are dependent, they are not literate, and they are not used to modern facilities of agriculture which can help them in increase crop production. So these are the major challenges faced. Along with this, the high yielding variety of crops are actually not very much known to Indian farmers. Along with this, they also have a problem that they are not into organic farming, because they don't know how are they actually affecting the economy and the equilibrium within nature, because they are not literate.
illiterate. So these are the major challenges because they are from rural areas. Differentiate between the fiber crop and the beverage crop. If we talk of the fiber crop, we have studied that the fiber crop is cotton and jute, and if we talk of the beverage crop, these are the beverage crop is the tea and coffee and cocoa. What is meant by green revolution? Green revolution was basically a revolution in the production of high yielding varieties of wheat and rice. It is basically it helps in large scale production of crops with better facilities. Discuss the condition necessary for cultivation of coffee. If we have studied coffee, coffee is a beverage crop which definitely requires at 14 to 27 degree with frost free days. It requires rainfall which should be around 100 to 200 centimeter. The soil should be porous and volcanic soil is also included. If we talk of the land part, in undulating highlands, slopes and plateaus are required for its cultivation. If we talk of labor, abundant labor is required in this, and the areas producing coffees are Brazil, Colombia, Western and Eastern Africa, etc. Right? So this was all about the question answers. I hope we had great time learning. Happy learning.